लाइट। तो देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सो वी विल ड्रॉ अ मिरर। लेट दिस इज द मिरर। मिरर की पहचान क्या होती है? इस पर पॉलिश होनी चाहिए। पॉलिश होने के बाद पॉलिश होने के बाद अब ये बन गया मिरर। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर एक लाइट रे, देखिए ऐसे करके यहाँ पर आ गई। इज इट क्लियर? ये जो लाइट रे आई है इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड बेटा, the point at which this incident ray is falling on the mirror is known as point of incidence। तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ये जो ब्लू ब्लू सा पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। ये क्या है? एक लाइन है जो मिरर के है परपेंडिकुलर। इसका अपना एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। नाउ दिस लाइट ray means incident ray will fall on the mirror and will go back to the same media like this। Now beta, this is ray is called the this one reflected ray। This ray is called the reflected ray। And now ये एक एंगल है, दिस इज एंगल रिप्रेजेंटेड बाय आई। इस आई को हम क्या बोलते हैं? आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। I hope the concept is clear. Please confirm। Now यहाँ पर एक एंगल है आर, इसको हम क्या कहते हैं? आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Then we have studied the basic concept of reflection of light। In this, we have seen that a light ray falls on a shiny surface and it go back into the same medium। This phenomena is known as the reflection of light।
The light ray which falls on the shiny surface is known as incident ray, and the light ray which go back to the same medium is known as reflected ray. And the point at which the incident ray meet with the mirror is called point of incidence. At the point of incidence, we draw a normal. What is a normal? Normal is a line perpendicular to the mirror. I hope the concept is clear. Please confirm. Now we are seeing definition of reflection of light. Reflection of light. Then see, when a light ray falls on a shiny surface, shiny means polished. Polished surface, then it come back to the same medium. This phenomena is known as reflection of light. So learn this statement: when a light ray falls on a shiny surface, then it come back to the same medium. This phenomena is known as reflection of light. करेंगे laws of reflection. देखिए यहाँ पर टू लॉज हैं. फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray. Ray meet at the same point in the same plane. This point is known as point of incidence. This point is known as point of incidence. Now, second law. According to second law, the angle of incidence is always equal to angle of
रिफ्लेक्शन। तो देखिए ओनली टू लॉस हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन। एंड सेकेंड लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. Angle I equals to angle R. I hope the concept is clear. अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए क्या होती है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as angle of incidence. Generally, it is represented by I, small I. So, please learn the definition. What is the definition? The angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. Generally, it is represented by small I. अब हम करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is defined as the angle between the normal and the reflected ray. Is known as, या वो तुम पहले ही बोल चुके, बस यहीं पर हमारा एंड हो गया डेफिनेशन। Shall we repeat? Angle of reflection is defined as the angle between the normal and the reflected ray. It is generally represented by R. Angle of reflection is generally represented by small r. I hope the concept is clear. अब हम पढ़ेंगे definition of point of incidence. Point of incidence.
तो देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द पॉइंट at which incident ray falls on the shiny surface. Shiny surface is known as point of incidence. Point of incidence. Shall we repeat the definition? The point at which incident ray falls on the shiny surface is known as point of incidence. At point of incidence, incident ray normal and reflected ray meet. It means at point of incidence, incident ray, normal and reflected ray meet. This we have already discussed in the laws of reflection. I hope the concept is clear. अब हम पढ़ेंगे definition of normal. तो देखिए क्या है ये? An imaginary line passing through point of incidence and perpendicular to the mirror is known as normal. It is an imaginary line. I hope the concept is clear. Shall we repeat the definition? An imaginary line passing through point of incidence and perpendicular to the mirror is known as normal. अब हम देखेंगे formation of image by a plane mirror. Formation of image by a plane mirror. तो देखिए यहां पर क्या है, दो केस बनते हैं जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और एक बार ऑब्जेक्ट
थोड़ा साइज का हो। तो देखिए, पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज अ लाइन। अभी तो ये केवल लाइन है बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे ही इस पर हम पॉलिश करेंगे, अब क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा शाइनी सरफेस। डायग्राम की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नाउ एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। मैं स्केल निकाल देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक डायग्राम बनाने की। सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ये इसकी पोजीशन है। तो नीचे भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा? यहीं पर आएगा, सेम डिस्टेंस पर। इट मीन्स ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर। इज इट क्लियर? क्यों? जितना मिरर के और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी, उतनी ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच की होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे? हमने स्केल को हटा दिया। अब देखिए, देखिए एक लाइट रे ऐसे आएगी और एक लाइट रे ऐसे आएगी। नाउ अब क्या होगा? हम लेंगे डॉटेड लाइन। तो देखिए, डॉटेड लाइन ऐसे रहेगी, ऐसे करके। एक डॉटेड लाइन और आएगी, ऐसे करके। इसको ऐसे बढ़ा देते है ना। अब क्या करेंगे हम? मिरर के फ्रंट में होती है डार्क लाइन, और मिरर के पीछे होती है कैसी? डॉटेड लाइन। देन देखिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ले लेंगे हम डार्क लाइन। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी बिल्कुल सेम। ये बन गया हमारा डायग्राम। कितना सुंदर डायग्राम बनाए, एग्जैक्ट। ये लाइट इधर आ रही है ऐसे करके, और ये रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड द, एक तरह से ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। ये कैसा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और नीचे क्या है? इमेज। देखिए, डायग्राम एकदम ये परफेक्ट है। अच्छा, अगर आप इसमें, आपका मन करता है मैं इसमें नॉर्मल और दिखा दूं, नॉर्मल, तो नॉर्मल हम कैसे दिखाएंगे? नॉर्मल हम दिखाएंगे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके, डॉटेड लाइन। एक ऐसी ही लाइन आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। एक यहाँ पर हो गई, एक और ले लेते हैं हम लोग।
ये बन गई डॉटेड लाइन। क्यों बनी? क्योंकि यहां पर हमको नॉर्मल बना देना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कुछ और, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एंगल आई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर। सिमिलरली यहां पर अब आई तो लिखेंगे नहीं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आई डैश, और यहां पर हम लिख सकते हैं आर डैश। दिस इज द perfect diagram of the image formed by a plane mirror। इसकी कंडीशन क्या होती है? जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर की होगी, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होगी।